गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 लेसन 13 एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग आज। एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट आर द कैश क्रॉप्स, नेम एनी 3 कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। The crops grown as raw material for industries and sold for money are called cash crop. 3 cash crops produced in India are tea, coffee and rubber. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। 4 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड एंड बिहार. What are food crops? The crops grown to feed people are called food crops. What is agriculture? Agriculture is the practice of farming and the cultivation of land, soil to grow crops and the rearing of animals to provide food, milk, wool and other products. Name any 2 pulses grown in India. 2 pulses grown in India are moong and masoor. What is livestock rearing? What is livestock rearing? Livestock rearing is commonly defined as domesticated animal raised in an agriculture setting to help in farm activities like plowing, transporting goods and producing goods such as meat, eggs, milk, fur, leather and wool. Why do the people of India rear cattle? What do you think will happen if there are no hens and cows? Cattle is reared to serve purpose like farming, carrying of goods, transportation and supplying of goods like milk, eggs. All these activities will come to an end if there are no cattle. Next question है what kind of soil and climate are good for growing rice? Name 2 states rice is grown. Warm and wet areas that have alluvial soil are good for growing rice. Rice is grown in West Bengal and Assam. Name 2 center of the textile industries in India. Are they close to cotton growing areas? Mumbai and Ahmedabad. Yes, Maharashtra and Gujarat are same states that grow cotton. Jowar and Bajra are important crops in Rajasthan. Why? Jowar and Bajra important crops in Rajasthan because they are grown in dry areas of Rajasthan. List 3 reasons why we need industries. तो इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वी नीड इंडस्ट्रीज बिकॉज दे मेक यूजफुल थिंग्स फॉर अस. दे प्रोवाइड जॉब्स ऑफ पीपल. अ कंट्री अर्न मनी बाय सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू अदर कंट्री. व्हाट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड फॉर ग्रोइंग wheat? Name 2 states where rice is grown. It grows in cool and moist climate. This winter crops is the staple food of the people of northern India. Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat, Punjab major wheat producing. What is cottage industry? Give an example. Cottage industry use simple machine or no machine at all. They need very few workers and can be run from homes with very little money. जैसे कि बास्केट वीविंग. कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होता है कि जो बिना मशीन के भी लोग कर सकते हैं और ये बहुत कम, इसमें जो काम करने वाले हैं लोग होते से बहुत कम लोग लगते हैं और ये घर पे भी कम पैसे में भी ये काम किया जैसे कि बास्केट की जो बिनाई होती है, जो बास्केट लकड़ी के बास्केट बनते हैं वो लोग घर पे ही 1-2 लोग मिलके कर सकते हैं. वाई कैटल फार्मिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग इज यूजफुल
to farmers. फार्मर्स के लिए क्यों यूजफुल है कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग इज यूजफुल टू फार्मर एज दे हेल्प इन farm activities like plotting the fields, drawing water from wells for irrigation. Some animals like bullocks, horse and camels are used for traveling and transporting goods. They produce goods such as meat, eggs, milk, fur, leather and wool. Next question is, which are the factors that help the farmer to grow many crops? The factors that help the farmer to grow many crops are favorable climate, fertile soil, proper irrigation facilities. तो ये आज हम लोग ने देख लिया एग्रीकल्चर इन इंडिया का क्वेश्चन आंसर. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बच्चों.